Hi everybody, a very good morning to everyone right in there. Welcome to the very session. My name is Preksha Sharma, your English educator at Unacademy, and I give you all a very warm welcome to this very particular session wherein we are going to deal with the very topic reported speech, and we are going to specifically talk about the interrogative sentences. So I am pretty sure that this is like one of the most wanted topics, and you guys are pretty excited about this because like a lot of students, they've been like asking me and they've been telling me like they were not really very good in the interrogative sentences, like whenever we have to report any interrogative part. So this very particular session is precisely connected to what is supposed to be done while we are reporting a question. Okay, so everybody, please make sure that you all are giving proper attention to every aspect of it. Also, please give me your confirmation in the comment section that I am correctly visible and audible to everybody right in there so that I can just go ahead with our session. Everybody, would you please just tell me in the comment section if I am pretty visible and audible to everybody right in there? Alrighty, here we go. Hi everybody, hello everyone. Alrighty. Okay, so I'm just assuming, okay, that you guys can see me well and you all can hear me well, okay? And then we are gonna make a move. Hey Sajad, hi dear, welcome to the very session. Yup, prank. Okay, yeah, I'm pretty visible to you. That's pretty good. So let's get going, everyone. I'm sure you guys know my name. I'm Preksha Sharma. If somebody is watching the video for the very first time, let me introduce myself. I've done Masters in English from Delhi University and have been guiding a lot of students for the past few years to be really good in their communication skills and to score good marks in their academics. And I'm pretty sure that I can help you guys as well. So you better go ahead with the best in your life and make sure that you are always maintaining a balance between the two by learning it the right way. Because if you're learning it the right way, that's like a more important thing. Okay, then we have the topic reported speech. The interrogative sentences are there. We had already done this very particular topic in detail earlier, wherein I told you all that what is reported speech. So अभी मुझे कौन बताने वाला है reported speech क्या होता है? Come on, tell me जल्दी से. Then we are gonna switch exactly to the slide wherein we are going to start with the interrogative sentences. Also, please note, once I'll be done with explaining this topic to you guys, I will have a lot of questions right in the form of the slides. No mentee quiz would be there. Okay, in this session only, wherein all the dialogue based form of questions would be there. You guys would have to give me the answer in the comment section. So stay tuned till the end. The session is going to be a little longer. So make sure that you all are listening to me very carefully. Okay, so what is a reported speech? Tell me in the comment section. What do you understand by this topic? What does it mean? We have already done that like this, and I'm sure that you guys have been into the practicing mode as well. You've been practicing a lot too. So tell me, what does it talk about? Yes, everybody. I'm just assuming कि आप लिख रहे हो answer. Direct and indirect narration. Okay. Hi, Vijay. It's an addition. All right. Yeah. In which we changed from direct to indirect or vice versa. Yeah, prank. Absolutely right. James, a grammatical component. All right. That is really one of the very technical information that you're providing us. However, I'm already aware of it. Explain in quite a layman's language. All right. Hi, Trisha. Very good morning. Okay. So you got that. ठीक है. तो reported speech क्या होता है? हमारे दो parts होते हैं. एक हमारा होता है direct speech. ठीक है. और एक हमारा क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है. डायरेक्ट स्पीच हमारा क्या होता है जो आपका डायरेक्ट होता है, बिल्कुल एज इन लाइक आप इसे बोलते हो फर्स्ट हैंड अकाउंट. यानी कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हो. सो जो भी मैं बोल रही हूँ, ठीक है, अगर आप वो जाके जैसे अब मैंने किसी को बोला, मैंने जेम्स को बोला दैट यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट. अब जेम्स जाके यही बात अगर प्रैंक को बताएगा कि मैम ने मुझे बोला कि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, वहां पे वो ये नहीं बोलेगा यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू. समझ आई बात कि क्या डिफरेंस है? दैट इज वॉट यू हैव टू कीप दैट इन योर माइंड. ठीक है. इन बेटा अग्रवाल बेटा, दैट इज एब्सोल्युटली राइट. आपके 9th और 10th में भी सीबीएसई ने दे रखा है. सो वी डोंट हैव एनी चॉइस, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. इनडायरेक्ट स्पीच हमारा क्या होता है विच वी से इनडायरेक्टली. दैट मीन्स दैट यू आर रिपोर्टिंग. ऑल राइट. इसे हम बोलते हैं सेकेंड हैंड अकाउंट. इसको आप क्या बोलते हो? सेकेंड हैंड अकाउंट. तो दीज आर द थिंग्स. और
आपके जितने भी रूल्स होते हैं, मैंने आपको बताया कि 3 चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होती हैं। पहली चीज़ हमारी होती है कि आपका टेंस कन्वर्शन, दूसरा आपका प्रोनाउंस जो चेंजेस हो रहे हैं, आपका टाइम एंड प्लेस से रिलेटेड जो चेंज हो रहा है, और फोर्थ आता है आपका कंजंक्शन, दी एंड द पंक्चुएशन ऑल्सो, फिफ्थ वन. So these are the key 5 points that you always have to concentrate upon whenever you are dealing with the topic reported speech. Am I clear on this to everybody right there? सबको समझ आई ये बात? Everyone got it? यस, ठीक है. सो अब होता है कि आपको हाउ टू चेंज द क्वेश्चंस इनटू स्टेटमेंट्स फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. मतलब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज कर पाते हो, अगर एक क्वेश्चन है उसको आप एक स्टेटमेंट में कैसे चेंज करते हो. दैट इज व्हाट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन. ऑल राइट, दिस इज लाइक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. प्लीज मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपको अगर मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट आर यू डूइंग, आपने जाके फॉर एग्जाम्पल तनु ने जाके प्रैंक वर्ल्ड को बोला आई एम सॉरी, कि मैम ने मुझसे पूछा मैं क्या कर रहा था. ठीक है, तो वहां पे आप क्या कर रहे हो, आप अपने क्वेश्चन को, जो हमारा एक क्वेश्चन है, उसको आप चेंज कर रहे हो किस में, स्टेटमेंट में. तो स्टेटमेंट में कभी भी हम लोग क्या लिखते हैं, हम हमेशा एक पीरियड लगाते हैं. दैट मीन्स अ फुल स्टॉप. आपका एक फुल स्टॉप लगता है. तो ये सबसे मेजर गलती होती है जिसकी वजह से, देखो आपके एग्जाम में 1 मार्क का ही क्वेश्चन आ रहा है. ठीक है, हमने देखा है ना जो सैंपल पेपर्स आ रहे हैं कि आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं 1-1 मार्क के पूछे जा रहे हैं, उसमें भी अगर आपने ये सारी गलती कर दी, आपने टेंस अच्छे से बदला, आपने प्रोनाउन अच्छे से बदला, आपने टाइम एंड प्लेस से रिलेटेड चीज अच्छे से बदला, आपने इनफैक्ट कंजंक्शन भी बहुत बढ़िया रखा, लेकिन आपने उसके एंड में जाके लगा दिया क्वेश्चन मार्क. टीचर वहां आधे मार्क्स नहीं काटेगी, टीचर आपके पूरे 1 मार्क काट लेगी. कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा उस क्वेश्चन का, क्योंकि आपने उसे अच्छे से रिपोर्ट ही नहीं किया, वो अभी भी क्वेश्चन नहीं है. समझ आ रही है मेरी बात? अगर आप अपना रिपोर्टेड स्पीच में एक भी पॉइंट मिस करते हो while converting it, my dear, your marks would not be given to you in your examination. Okay, this is like a very important thing I'm telling you. So you better not keep that question mark at all. ये बहुत बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं, नहीं करना है. क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा अगर आपने एक क्वेश्चन को कन्वर्ट रिपोर्ट कर दिया है. So whenever you are reporting a question, that means that it has to be reported by using a full stop. Do you all get that? समझ में आई ये बात? गेमिंग लाइफ क्या समझ में नहीं आया आपको? आई होप दैट यू आर नॉट स्पैमिंग एंड यू आर रियली मीन इट. असर्टिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव. मैम इसके सिवा भी और कोई टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में? नहीं, और कोई टॉपिक नहीं है मोहित. देयर इज नो अदर टॉपिक. ऑल राइट. हाँ जी, आपका क्या क्वेश्चन है विजय? बेटा जब भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रही हूँ, गेमिंग लाइव देखो, जब भी आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, मैं एक नॉर्मल सी बात आपको बताती हूँ. जैसे क्वेश्चन मैंने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, आप क्वेश्चन को अगर रिपोर्ट कर रहे हो, यानी कि आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हो, तो अब वो क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं रहेगा. मेरा क्वेश्चन आपको था व्हाट आर यू डूइंग. आप जाके अगर तनु को बता रहे हो तो वो आपका क्वेश्चन तनु को नहीं है. आप तनु को बताओगे उसको कन्वर्ट करके एक स्टेटमेंट में, और स्टेटमेंट के एंड पे हम हमेशा एक फुल स्टॉप लगाते हैं. आप क्वेश्चन मार्क को रिटेन नहीं रख सकते हो, क्योंकि मैंने पूछा था वो आपको. आप नहीं पूछ रहे वो तनु से जब आप उसको बता रहे हो कि मैम ने क्या बोला. समझ में आई ये बात? गॉट दैट? इज दैट क्लियर? James, you can just go and check it on the site there. All right, you'll come to know about it because there are different time durations. So accordingly, you'll get an idea. Yep, this is for both 9th and 10th. ठीक है, चलिए अब आगे मैं आपको बताती हूँ. देखो हमारे 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं. आई मीन सीबीएसई सैम्पल पेपर में तो फाइनल दे रखा है. ऑल्सो दिस इज वन ऑफ द कैटेगरीज वेयर द स्टूडेंट्स दे गेट अ लिटिल ट्रिकी. ओके, सो ऑब्वियसली एन एग्जामिनर वांट्स टू नो कि आप कैसे कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो. तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, गुड इवनिंग फ्रॉम सॉरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम माई एंड देयर सुरेंद्र. ठीक है, सो इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या है. पहला टाइप आपका होता है क्लोज क्वेश्चन. क्लोज क्वेश्चन क्या होता है, जिसमें आपको आंसर येस में मिलता है या नो में मिलता है. सो वेन एवर यू गेट एन आंसर इन ईदर येस और नो, दैट्स नोन एज अ क्लोज क्वेश्चन. ठीक है, और इसका क्या मतलब है कि मतलब येस और नो में मिलेगा. अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ, जैसे मेरे को एक एक्स्ट्रा पेन की जरूरत है, ठीक है, तनु ने पूछा अनुराधा से
कि डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन। तो अनुराधा अब कहानियां नहीं बताएगी ना कि मैंने पिछले महीने 5 जेल पेन्स खरीदे थे, इस महीने सिर्फ 2 ही बॉल पेन खरीदे थे और उसमें से एक तो खो गया और पिछले जो 4 थे वो तो मैंने किसी को दे दिए, तो मेरे पास नहीं है। She'll not be telling your story. There would not be any proper statement to it. Instead, she would be giving you an answer in either yes or no. अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैम आपके पास कल क्या आप एक एक्स्ट्रा क्लास लोगे, तो मेरा आंसर या तो yes होगा या तो no होगा. All right. So whenever the question has got an answer in either yes or no, that's known as a closed question. दैट मीन्स कि उसका जवाब आपको ऑलरेडी पता है, या तो वो हाँ बोलेगा या ना. अगर मैं पूछ रही हूँ मेरी बहन से कि आज मूवी देखने चलेगी रात को, तो वो कहेगी हाँ या ना. Okay, she is not going to tell me the entire story why she didn't want to, why she doesn't, why she's not interested in going for the movie. Okay, समझ में आ रही है ये बात. तो अब बेसिकली क्या होता है, जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने आपको बोला, देखो यहाँ पे आया क्वेश्चन. वेद asked, do you need juice? ठीक है, वेद ने पूछा, कॉमा आया, इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस, डू यू नीड जूस, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोजेस. ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे ही रहना चाहिए. अगर आप क्वेश्चन के अंदर लगा रहे हो इन्वर्टेड कॉमा, वो गलत होता है. ठीक है, मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि डायरेक्ट स्पीच में हम कैसे सही तरीके से लिखते हैं. ओके, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ऑल्सो अगर मैं अब आपको ये बोलूं, he said are you fine, these are the examples of the questions in yes or no. ठीक है, जैसे कि अगर उसने बोला are you fine, क्या तुम ठीक हो, आप कहोगे yes I am. Okay, और you'll be like no I am not. ठीक है, तो बेसिकली क्या देख रहे हो आप यहाँ पे, क्या किससे मुझे पता चल रहा है कि yes no क्वेश्चन है. व्हाट इज इट एवरीबडी, किससे मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे ये yes और no क्वेश्चंस हैं. Everyone understand, guys understand clearly. इसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस सेशंस आया करेंगे. ठीक है, यहाँ पे मैंने R लगाया है, यहाँ पे मैंने do लगाया है, तो दोनों क्या है, ये है ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, आपकी हेल्पिंग वर्ब्स. ओके, डू यू ऑल अग्री विद मी, से yes or no in the comment section guys, quickly everybody. ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. समझ में आ रही है बात. यस, या दे आर द हेल्पिंग वर्ब्स. तो उसमें हेल्पिंग वर्ब्स में क्या होता है, दैट वी हैव गॉट ऑल दीज हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे कि इज हो गया, ठीक है, इज हो गया, आर हो गया, शुड, आपके सारे मॉडल वर्ब्स आ जाते हैं. शुड, वुड आ गया, कुड आ गया, मस्ट आ गया, विल, मे, माइट, शेल, कैन आ गया. फिर ऑफ कोर्स हैज, हैव, हैड आ गया, एम आ गया, इज, एम, आर, डू, डिड, डज आ गया. ऑल राइट, देन हेयर, डिड. So the whatever the auxiliary verbs we have had, do, did, does और is, am, are और सारे modal verbs, वो सारे आपकी इस लिस्ट में आते हैं जब हम closed question से डील करते हैं. All right, when does your school reopen after the winter break? This is the WH question. अभी I'm just dealing with your closed questions. समझ आ रही है आपको बात, समझ में आ रही है एवरीबडी. कैन बेटा मॉडल वर्ब है, अफा कैन मॉडल वर्ब है. सारे मॉडल वर्ब्स आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना. मैंने आपसे पूछा कि कैन यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, और कैन यू गेट मी, मैंने भाई से बोला कि कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वो मुंह पे मेरे ना बोल के चला गया. मुझे पता था या तो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा, राइट. और अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि वुड यू हेल्प मी विद द मैथ्स एक्सरसाइज, तो आपका फ्रेंड काइंड है, कह रहा हाँ ठीक है. सो हाँ या ना, इन क्वेश्चंस के जो हमेशा आंसर येस और नो में ही होंगे. जो भी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आपकी हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि आपके ऑक्सिलरी वर्ब से जो भी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ऑल राइट, वो हमेशा येस और नो में होगा. डू यू गेट दैट, इज दैट क्लियर एवरीबडी. Alrighty, just a minute, Mohit. I said to my friend, when does your school reopen after the winter break? I asked my friend, when would her school reopen after. बेटा हर क्यों लगाओगे, देखो पहले मेरी बात मोहित अच्छे से समझो. Guys, let me address this very particular question of Mohit. Alright, guys, would you try the question? Question is very easy. When does your school reopen after the winter break? Okay. तो पहले तो ये क्वेश्चन आपने खुद बनाया मोहित, या ये क्वेश्चन आपने कहीं से लिया है, टेल मी. गाइस, ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. You all can give it a shot. Try attempting the question, everybody. Come on, writing the answer or not.
सर ने दिया था, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा गाइस, जल्दी से मेरे को। सबसे पहला काम मोहित होता है, हम हमेशा टेंस देखते हैं। टेंस क्या है, मैं भी आपको बताती हूँ। देखो टेंस बताओ मुझे, टेंस क्या है। मैंने ये बात बता रखी है आपको, अगर आपने मेरा सेशन नहीं देखा रिपोर्टेड स्पीच, बेटा जाके एक बार फिर से देख लेना, ठीक है, जहां पे मैंने बहुत एक्सप्लिसिटली पूरा टॉपिक आपको बता रखा है। और राइट, ये वाला जो सेशन है इसमें मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस का ही करवा रही हूँ, ठीक है। तो प्रैंक वर्ल्ड ही सेड टू शी, विल यू बी गोइंग टू स्कूल? ना बेटा, ऐसे थोड़ी ना करते हैं प्रैंक वर्ल्ड, आप विल कहाँ से ले आओगे। टेंस का ध्यान दो ना। साजिद पास्ट कैसे है बेटा, पास्ट कैसे है, क्या वर्ब यूज हो रहा है। सुरेंद्र कह रहा है प्रेजेंट, तरुणा कह रही है सिंपल प्रेजेंट, ऑफ कोर्स। क्या है मोहित, टेंस बताओ ना आप मुझे, क्या दे रखा है। व्हेन डज योर स्कूल रीओपन आफ्टर द विंटर ब्रेक? डज आपका क्या हुआ, डज हमारा सिंपल प्रेजेंट में आता है, और क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं इनके साथ हमेशा एक मेन वर्ब लगाया जाता है। यस और नो, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं क्या बोलूंगी, यही हम ऐसे बोलते हैं ना, लाइक आई डू नॉट लाइक दिस पिज्जा, तो डू के साथ लाइक आया मेन वर्ब। जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, आई शुड वर्क हार्ड, ऑलराइट, आई विल वर्क हार्ड, इन सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ एक मेन वर्ब डेफिनेटली होता ही होता है। समझ में आई बात। तो यहाँ पे आपका सिंपल प्रेजेंट है। वेन क्यों लगा रहे हो तरुणा? अच्छा वेन, अच्छा वेन है क्वेश्चन में। हाँ, सो डज के साथ एक मेन वर्ब, ध्यान से सुनो, ये एक अच्छा पॉइंट है, मैं यहीं पे समझा रही हूँ क्योंकि मैं नेक्स्ट स्लाइड में ये समझाने वाली थी। ध्यान से सुनो, when does your school reopen after the winter break? ठीक है, सो does के साथ मेन वर्ब कौन सा लगाया है क्वेश्चन में, जल्दी बताओ। does के साथ मेन वर्ब कौन सा है, मेन वर्ब ढूंढो अब आप, क्या है मेन वर्ब। मेन योर तो बेटा प्रोनाउन हुआ ना। योर वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है एक्शन वर्ड। स्टूडेंट्स क्या हो गया है, बहुत जा रहे हैं, बहुत जाने का टाइम आ रहा है और आप लोग मुझे कैसे आंसर्स दे रहे हो। प्रत्युषा योर आपका प्रोनाउन है बेटा, मेन वर्ब, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ब, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड जिसमें कोई एक्शन होता है। योर में क्या एक्शन है, योर प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सम नाउन, राइट। रीओपन बीटीएस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड त्रिशा, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। सो अब डस के साथ अब पॉइंट समझो, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ। ऑल राइट, पॉइंट समझना, यहाँ पे क्या बता रही हूं मैं आपको, एवरीबडी अंडरस्टैंड। जब भी क्वेश्चन में डू डिड और डज आता है, ध्यान से सुनो, स्पेशली डू एंड डज, उसके साथ हमेशा देखो मेन वर्ब कौन सा यूज किया है, रीओपन यूज हुआ ऊपर क्वेश्चन में। ध्यान से सुनना जो भी अभी मुझे सुन रहा है, क्वेश्चन है बेटा, द क्वेश्चन इज, आई सेड टू माई फ्रेंड, when does your school reopen? Let me explain it here, guys. Just a moment, okay? Okay, just a moment, guys. Let me explain it over here to you guys. Let me write the question. Okay, so the question is, I said to my friend, okay, question is, when does your school reopen after the winter break? क्वेश्चन नोट कर लो, ओके, एंड देन दिस, ठीक है। ऑल राइट, व्हाट ए क्वेश्चन वाज लाइक, यहाँ पे आई सेड टू माय फ्रेंड व्हेन डज योर स्कूल रीओपन आफ्टर द विंटर ब्रेक। आपके क्वेश्चंस में बेटा जब भी आपको ना डज मिलता है या डू मिलता है, ठीक है, उसके साथ आप हमेशा मेन वर्ब देखते हो। यहाँ पे आपका डज आया, फिर मेन वर्ब आपका रीओपन है, एक्शन वर्ड तो यही है ना। योर तो प्रोनाउन हो गया, स्कूल आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ये तो आफ्टर द विंटर ब्रेक में कुछ भी वर्ब नहीं है, कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, तो इसके साथ आपका रीओपन मेन वर्ब है। आप सबसे पहला काम किसी भी टेंस को, आई मीन क्या कहते हैं, सेंटेंस को कन्वर्ट करने में टेंस ढूंढते हो। टेंस यहाँ पे मुझे पता चल रहा है मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। डू यू ऑल अग्री? सिंपल प्रेजेंट टेंस है मेरा यहाँ पे। समझ आ रही है ये बात, समझ आ रही है, मैं जो समझा रही हूँ उसे समझो।
सिंपल प्रेजेंट टेंस है, डज के साथ रीओपन है। जब भी डू और डज दिखेगा किसी भी सेंटेंस में, ऑल राइट, आप हमेशा डज और डू को ड्रॉप कर देते हो। समझो व्हाट डू यू मीन बाय ड्रॉप। ड्रॉप मतलब व्हेन यू आर गोना कन्वर्ट इट, यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ द मेन वर्ब का कन्वर्जन। अब आप डज को ड्रॉप कर दोगे, डू को ड्रॉप कर दोगे, यानी कि अब ये सेंटेंस का आंसर क्या हुआ, आई आस्क माई फ्रेंड व्हेन, ऑल राइट, व्हेन हर स्कूल reopened after the winter break. समझ में आए? Or it could be when her school after the no, it's gonna be this way only, when her school reopened after the winter break. Do you get that everybody? समझ में आया मैंने क्या बोला? डू और डस को ड्रॉप कर देते हैं हम, हमें उससे कोई लिंक नहीं रखना होता क्योंकि हमारा मेन वर्ब जो है वो कन्वर्ट होता है। सो रीओपन का रीओपन्ड हो जाएगा। वर्ब फर्स्ट का लाइक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना रीओपन, उसका सेकंड फॉर्म कर दोगे रीओपन। समझ आई मोहित? इज दैट क्लियर टू यू? So the answer is I asked my friend when her school reopened after the winter break. Full stop. Got that? Is this clear to everybody? When her school reopened. तरुणा, आप reopen simple present form of the verb है, उसको आप simple past में convert करोगे ना बेटा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे ना। टेंस कन्वर्जन इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू बी केयरफुल हेयर अबाउट। हर आएगा ना? ऑल राइट, और यू कैन से हिज एज वेल, ठीक है, दैट इज ऑल ओके। हिज भी लगा सकते हो, हर भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा दोगे, ठीक है, स्लैश करके भी लिख दोगे, एग्जाम में मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे। हिज लगा दोगे ऐसे क्वेश्चंस में जब हमें नहीं पता होता है, ऑल राइट, सो यू कैन गो अहेड विद इधर हिज और हर और स्लैश करके भी लिख दोगे, मार्क्स नहीं कटते हैं। नो टीचर एवर डिडक्ट द मार्क्स सिंस वी आर नॉट अवेयर ऑफ द जेंडर हेयर। क्लियर? समझ में आ गया? मोहित बेटा आप कहाँ चले गए? आई होप दैट्स क्लियर। अच्छा आपको क्लियर है, चलिए तो अब हम आगे चलते हैं जो मैंने आपको बताया था। ऑक्सिलरी वर्ब्स का अब क्या होता है, प्रैक्टिस करते हैं हम कुछ, ठीक है। यहाँ पे द सेल्समैन सेड आर यू इंटरेस्टेड इन द स्कीम, हाउ आर यू गोइंग टू कन्वर्ट इट, देयर आर लाइक 4 ऑप्शंस गिवन टू ऑल ऑफ यू। इसमें से मुझे बताओ कि सही आंसर कौन सा है, ठीक है, ध्यान से देख के बताना, ठीक है। दिस इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम टेलिंग यू ऑल राइट हेयर। Okay, also one important thing that I missed telling you all, just a minute people, just a minute please, yeah, just a minute. Okay, so what happened here is like the conjunction that you're gonna use, you know, जो आपको conjunction use करना होता है आपके ये वाले sentences में, yes और no में, वो either it is if or whether, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में दैट वी डिड ऑन रिपोर्टेड स्पीच कि इमीडिएटली इफ और वेदर के बाद आपका सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद आपका वर्ब आना चाहिए। अगर आप वर्ब को सेकंड पोजीशन पे ही रखते हो इफ और वेदर के बाद, दैट मीन्स आपने उसको कन्वर्ट नहीं किया है अभी तक। इमीडिएटली इफ और वेदर के बाद आपका सब्जेक्ट आना चाहिए, ध्यान से समझो जो कह रही हूँ, उसके बाद वर्ब को लिखना, इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। So what is the answer coming? Surinder is saying D. So the salesman said that if I was interested in the scheme, the salesman said that if I were interested in the scheme, the salesman asked if I'm interested in the scheme, the salesman asked me if I was interested in the scheme. So what is the majority of the answer? Anuradha says D and Prank World also says D. ठीक है, absolutely correct, ठीक है। R दे रखा है, yes no question है, क्लियर हो गया, या तो if या whether लगाऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके पास्ट फॉर्म में दे रखा है। मैंने आपको बोल रहा है रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट फॉर्म में दे रखा है, इसका कट क्लियर इंडिकेशन है। जो आपके इन्वर्टेड कॉमा के अंडर सेंटेंस दे रखा है उसका टेंस डेफिनेटली चेंज होगा। ऑल राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, द सेल्समैन आस्क्ड, क्योंकि वो पूछ रहा है क्वेश्चन, हम हमेशा रिपोर्टेड वर्ब आस्क ले सकते हैं, मी, ठीक है। आपने लगाया इफ, फिर आपने लगाया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपने लगाया वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है आर जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसको सिंपल पास्ट में चेंज कर दिया, इंटरेस्टेड इन द स्कीम, दैट्स इट। ऑल राइट बेटा, वो सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आस्क दे रखा है, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म दे रखी है वर्ब की, और सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं लगाई जाती, यहाँ पे ऑलरेडी पास्ट में दे रखा है, आप भी पास्ट ही यूज करोगे ना, आप सिंपल प्रेजेंट फॉर्म क्यों लगा रहे हो? अगर सिंपल प्रेजेंट फॉर्म होता है तो फिर आगे वर्ब
का टेंस चेंज नहीं होता जो इस सेंटेंस में नहीं हुआ, तो ये हमारा सेंटेंस नहीं है, हमें चेंज करना है हमारा टेंस, क्योंकि हमारा रिपोर्टेड वर्ब जो है वो पास में दे रखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन everybody. The secretary said, is Mr. Sharma in his office? So what are the right, I mean, sorry, the options are being given. So what is the right answer out of A, B, C, D? Okay. The secretary said that if Mr. Sharma was in his office, the secretary inquired if Mr. Sharma was in his office. The secretary inquired that if Mr. Sharma was in his office. The secretary asked if Mr. Sharma had been in his office. So क्या सही आंसर है इसका? Quickly everybody. Yes, B. Pratyusha says B. Surinder says D. All right. And B. Shivam says B. Okay. सो देखो ये वाला आपका ए वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, यहाँ पे दैट दे रखा है, कभी भी आप दैट कंजंक्शन नहीं लगाओगे क्वेश्चंस में, दैट्स नॉट एट ऑल वेलकमिंग, सो दैट्स रॉन्ग। ठीक है, अब मैं सी पे आती हूँ, द सेक्रेटरी इंक्वायर्ड, फिर से दैट आ गया, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देन डी में द सेक्रेटरी आस्क्ड इफ मिस्टर शर्मा हैड बीन, आप हैड बीन क्यों लगा रहे हो, यहाँ तो मेरा सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में कैसे चेंज करोगे, वॉज लगा के ना, सो दिस इज रॉन्ग टू। तो यहाँ पे द सेक्रेटरी इंक्वायर्ड, क्योंकि ये एक इंक्वायरी है, आप यहाँ पे आस्क्ड भी लिखते वो भी ठीक रहता। कभी भी जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है आप हमेशा टोन देखते हो, ठीक है, टोन से आपको पता चलता है कि आपको क्या लिखना है, यूजुअली आप आस्क्ड लिख सकते हो, दैट इज ऑलवेज राइट। ऑल राइट, इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? तो द सेक्रेटरी इंक्वायर्ड इफ के बाद आपने लगाया सब्जेक्ट, मिस्टर शर्मा वॉज इन हिज ऑफिस, ठीक है, दैट इज एन एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर, गॉट दैट। किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज डू आस्क मी। Rita said, can we go tomorrow? So what are we gonna write in here? We have got 4 options. कुछ भी डाउट हो बेटा प्लीज पूछ लेना, बिकॉज रिपोर्टेड स्पीच ट्रिकी हो सकता है, डायलॉग बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, अभी हम लोग डायलॉग बेस्ड भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड एवरीबॉडी, नो डाउट्स त्रिशा, एब्सोल्युटली अमेजिंग, गुड गुड गुड, ऑल राइट। Yes, Rita said, can we go tomorrow? So Rita said, if we can go tomorrow. Rita asked if we could go the following day. Rita asked if we could go tomorrow. Rita said whether we could go tomorrow. So B is absolutely the right answer. Yeah, Trisha, Saja, Surendra, Prank. All right, Janvi, बेटा C कैसे करोगे? Tomorrow को चेंज करोगे ना, मैंने क्या बोला है, 5 पॉइंट्स ध्यान रखो, पहला टेंसेस, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा टाइम एंड प्लेस, टुमारो टाइम एंड प्लेस की कैटेगरी में आता है, चौथा कंजंक्शन, पांचवा पंक्चुएशन। ये 5 पॉइंट्स हमेशा अपनी चेकलिस्ट रखा करो रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड, कि क्या मैंने ये सब चीजें चेंज कर दी है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज रीटा आस्क इफ वी कुड गो द फॉलोइंग डे। यहाँ पे आपका कैन का कैन रहा रॉन्ग, टुमारो रहा रॉन्ग, यहाँ पे कुड में चेंज हो गया, ठीक है, फिर टुमारो रॉन्ग, ठीक है, फिर यहाँ पे भी कुड में चेंज हो गया लेकिन टुमारो रॉन्ग। So we are going to change can into, of course, sorry, here it is. We are going to change can into could. ठीक है, उसके बाद जो मेन वर्ब है वो एज इट इज रहता है, उसको चेंज करने मत लग जाया करो। ऑल राइट, इज दैट क्लियर एवरीबडी? नेक्स्ट डे का फॉलोइंग हो जाता है, नेक्स्ट चेंजेस टू फॉलोइंग। ऑल राइट कृष्णा, वो सेशन आपका आ रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट टू, ओके। सत्यम मे बी दिस वीक सम टाइम, ऑल राइट। Yeah, C is not the right answer. No, that is absolutely right. I'm saying B is the right answer. Na, tomorrow changed to the following day. All right. Is that clear? समझ आया? Easy peasy lemon squeezy. Why said change into us? क्योंकि बेटा जब भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो आप हमेशा उस सेट को कन्वर्ट कर सकते हो आस्क में, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप उसको हमेशा आस्क में चेंज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हो, लाइक वेन एवर यू आस्क समथिंग, लाइक वेन एवर यू आर पोजिंग अ क्वेश्चन, दैट इज ऑलवेज लाइक आस्किंग, मैं कुछ पूछ रही हूँ ना आपसे, तो मैं हमेशा आस्क में बोल सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्राइवर सेड, डू यू वांट टू हॉल्ट फॉर अ व्हाइल? तो हाउ आर वी गोना कन्वर्ट इट? शुड का यूज फ्यूचर के लिए कर सकते हैं, जैसे शैल का करते हैं, सत्यम कर सकते हो, नहीं, उस केस में शुड का नहीं कर सकते हो आप,
Should is like more precisely used for like advice or like when you are talking about some sort of compulsion or necessity. In that context, you may go ahead with it. Okay, here we go. देखो दिव्या, क्वेरीड आप तब लिख सकते हो जब वो एक्चुअली क्वेरी की जा रही है. क्वेरी का क्या मतलब होता है? लाइक अगर मैं आपको मुझसे कोई डाउट पूछ रहे हो तो दैट्स अ क्वेरी काइंड ऑफ अ थिंग. टोन चेक करो. जैसे एक क्वेश्चन में अभी हमने पीछे किया, वो इंक्वायरी थी. मैं पूछने आई हूँ कि क्या है मिस्टर शर्मा ऑफिस में, तो मैं इंक्वायर कर रही हूँ. ठीक है, सो दैट टोन ऑलवेज वर्क. सो टू बी ऑन अ सेफर साइड एंड नॉट टू लेट योर मार्क बी डिडक्टेड इन योर एग्जामिनेशन, गो ahead with a safer word instead. Okay. Okay, so the driver said if we wanted to hold for a while. The driver asked if we want to hold for a while. The driver asked if we wanted to hold for a while. The driver asked if we wanted to hold for a while. Of course, that is absolutely right. देखो ये वाला correct नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे if we wanted तो उसने change कर दिया. Do का question है. सब ध्यान दो. Everybody, do वाला question है. Do को हम do के साथ main verb क्या आ रहा है? What is the main verb? Main verb क्या use किया जा रहा है यहाँ पे? मेन वर्ब क्या यूज हुआ है ये बताओ. व्हाट इज द मेन वर्ब दैट हैज बीन यूज्ड हियर? हाँ, वांट है ना. तो आपने डू को तो कर दिया, हटा दिया. अब यहाँ पे वांटेड चेंज कर दिया इन्होंने, लेकिन यहाँ पे अ क्यों लगाया? यहाँ पे टू है. सारे वर्ड्स का भी ध्यान रखना है. दिस इज रॉन्ग. द ड्राइवर आस्क इफ वी वांट, यहाँ पे चेंज नहीं किया. रॉन्ग. द ड्राइवर आस्क, ये रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ आस्क आ गया. डी में द ड्राइवर आस्क्ड. Absolutely correct. If we wanted to hold for a while. Very right. You have changed the simple present form of the verb into the simple past form of the verb. ठीक है. हाँ, वेरी राइट. सब ठीक कह रहे हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. हरीश सेड विल यू अकम्पनी मी देयर. जो चार ऑप्शंस हैं, क्या सही आंसर होगा? हरीश सेड विल यू अकम्पनी मी देयर. व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर? सत्यम, आई अंडरस्टैंड बेटा, थोड़ा प्रैक्टिस करने से ही आता है. थोड़ा टाइम सेट कर लिया करो अपनी वॉच में और देखा करो कि आप अपना जो मैंने आपको बोला है एजुकार्ट के सैम्पल पेपर्स मंगा लो या ओस्टवाल के सैम्पल पेपर्स मंगा लो. ऑर्डर द बुक. ओके, इट बी डिलीवर्ड एट योर प्लेस एज सुन एज पॉसिबल. उसमें प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो. ओके, वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट यू विल कम टू नो कि आपको कितना टाइम लग रहा है उस पर्टिकुलर सेक्शन से डील करने में. हो सकता है दैट यू आर टेकिंग 15 minutes और यू आर टेकिंग जस्ट 10 minutes. सो यू हैव टू डू दैट ऑन अ रेगुलर बेसिस. दैट वे योर प्रैक्टिस वुड डिवेलप विद टाइम. So just start working on it and it'll be very, very helpful for you. Okay, so just go ahead with it, everybody. We have A, B, C, D. A. Harish asked me if I would accompany him there. Harish asked if I could. हाँ, यहाँ पे ये गलत है क्योंकि ये could दे रखा है. ठीक है, will का जो conversion होता है वो हमारा would होता है. All right, will का will नहीं रहेगा. This is also wrong and that नहीं आएगा बिल्कुल भी. And that is absolutely wrong. So A is the right answer. Harish asked me if I would accompany him there. That is an absolute amazing right answer. ठीक है. Okay, now we have the another type of questions. We are done with the closed ended questions. अब हमारे open ended questions. Open ended questions वो वाले questions होते हैं जो आपको एक proper sentence में answer देते हैं. If I'm asking you that why are you not doing the practice on a regular basis, you will not answer me in yes or no. करोगे answer yes or no में? नहीं ना, right? अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, आप हाँ या ना में मुझे आंसर नहीं देने वाले हो. आपका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आएगा कि मैम ये रीज़न है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मेरी क्लासेस होती हैं, मेरी ट्यूशंस होती हैं, फिर मैं स्कूल में प्रैक्टिस चल रही है कुछ. तो देयर कुड बी एनी रीज़न बट अ प्रॉपर सेंटेंस वुड बी कमिंग टू मी. डू यू ऑल एग्री विद मी? समझ में आई ये बात? हमने इफ और वेदर वाले क्वेश्चंस कर लिए जहां पे आपको इफ और वेदर कंजंक्शन लगाना है. उसके बाद आपको हमेशा ध्यान में रखनी होती है कि आपको सब्जेक्ट लगाना है फिर वर्ब लगाना है. ठीक है, दैट्स वेरी सिंपल. नाउ ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर द क्वेश्चंस व्हिच आर यूजुअली योर WH क्वेश्चंस. ठीक है, सो दे ऑलवेज गिव यू एन आंसर इन अ प्रॉपर सेंटेंस. ऑल राइट, जैसे कि मैंने बोला क्वेश्चन है वेद एज हाउ आर यू, आप कैसे हो. आप प्रॉपर आंसर दोगे. आप ये नहीं बोलोगे यस नो, आप बोलोगे आई एम डूइंग फाइन, हाउ अबाउट यू. ओके, देन वी हैव अनदर क्वेश्चन. ही सेड वेयर आर यू, तू कहाँ पे है. आप ये नहीं बोलोगे यस नो, आप ये कहोगे दैट आई एम जस्ट कमिंग, आई एम ऑन माई वे.
All right, there would always be an answer to this. So whenever your question starts with a WH word, and how is of course comes under, like how also comes under the WH word. So whenever you are asking the question, all right, the WH word, I mean whenever it's a WH word, so you have to be very careful about this very aspect, that you know that this is absolutely coming under the category of open-ended questions. ठीक है? अब देखो क्या क्या होता है हमारा व्हाट आता है, ठीक है, जैसे कि मैंने कोई भी सेंटेंस बोल दिया दैट व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट वीकेंड, ऑल राइट, एंड व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू सिंगापुर दिस फॉर द कॉन्फ्रेंस, और वेयर हैव यू बीन द लास्ट सॉरी ड्यूरिंग द लास्ट समर, or whom did you meet in the last party, or when did you cover the entire syllabus, how are you going to cover the entire syllabus. So the answers that are going to come, they are going to come in a proper sentence, and that is why they come under the category of the WH questions. समझ में आ रही है ये बात आपको? Are you all getting that? Yep, yes, BTS, yes, आपका जो how है word, that also comes under the category of a WH question. ठीक है, समझ में आ गया सबको? Yes or no? Thumbs up in the comment section, everybody. Quickly, guys, quickly do that. Alrighty, said any change. Okay, ma'am, any said change in as told, ma'am, please tell me, ma'am. I don't get, हाँ, I asked or told. बेटा जब भी क्वेश्चन होगा वो asked हो जाएगा. किसी ने बोला that I am not coming to the party tonight, तो मैंने वो बोला. Preksha told that she was not coming to the party that night. उसने बोला था. So you can change it into said, or sorry, you can whenever it says, like whenever it uses the term said, you can change it into the term told. That is like absolutely correct and acceptable, not problematic at all. All right, got that? चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं थोड़े क्वेश्चंस. यहाँ पे क्या है, आपका ज्वाइनिंग कंजंक्शन आपका WH वर्ड ही रहता है. अगर आपने देखो कोई भी क्वेश्चंस में आप कभी भी दैट नहीं लगाते हो, चाहे वो क्लोज क्वेश्चन हो चाहे वो ओपन एंडेड क्वेश्चन हो, आप नहीं लगाओगे दैट. दैट इज नॉट वेलकमिंग. ओके, and with the WH words, sorry, in the close question सिर्फ if और whether लगाया जाता है. इन और आपका जो WH क्वेश्चंस है उसमें सिर्फ WH क्वेश्चंस ही लगाए जाते हैं. तो बी केयरफुल अबाउट व्हाट आई एम मेंशनिंग टू यू ऑल राइट है. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? सबको समझ में आ गई ये बात? यस गाइस, इज दिस क्लियर एवरीवन? समझ में आया क्या बोला है मैंने? All right. So now finally, like quickly give me the answers of the questions that are being presented right in here. The very first question is Grandpa asked, what is the time by your watch? All right. What is the time by your watch? So the police inquired about the case. The police asked about the case. कौन सा सही है मैम? The police है बेटा, पुलिस के केस में तो इंक्वायरी आएगी. All right. इंक्वायरी आएगी. प्रत्युषा, हम कभी भी बेटा को ज्वाइनिंग कंजंक्शन दैट नहीं लगाते हैं आपके क्लोज क्वेश्चंस में या फिर आपके ओपन एंडेड क्वेश्चंस में. ठीक है, आप दैट नहीं लगाओगे. आप हमेशा क्या कहते हैं, ध्यान रखोगे कि अगर WH क्वेश्चन है तो WH वर्ड ही आपका ज्वाइनिंग कंजंक्शन होगा, और अगर आपका क्या कहते हैं क्लोज क्वेश्चन है तो उसमें सिर्फ इफ और वेदर ही होगा. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? जल्दी से आंसर दो, इसका आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? Quickly give me the answer of this very particular question. Okay, so Aryan says C, Anuradha says B. Okay, C. Okay, so Grandpa asked me what time it was by my watch. Grandpa asked me what was the time by my watch. Grandpa asked me what the time was by my watch. Grandpa asks me what time it was by. Of course, C is the right answer. ठीक है, ये इसलिए नहीं होगा what time. All right, यहाँ पे it कुछ नहीं आया है. All right, this is wrong. ठीक है, ग्रैंडपा आस्क्ड मी व्हाट वाज, आप व्हाट के बाद ये नहीं लगाओगे वर्ब, दिस इज रॉन्ग. आपका क्या कहते हैं सब्जेक्ट आना चाहिए. सो ग्रैंडपा आस्क्ड मी व्हाट द टाइम वाज, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. आस्क यहाँ पे आ गया, दिस इज रॉन्ग. ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीबडी? गॉट दैट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द गार्ड आस्क्ड हु आर यू? ABCD क्या सही आंसर है? The guard asked, who are you? What are we gonna write in here? The guard asked who he was. The guard asked me who he was. The guard asks me who he was. The guard asked me who I was. What is going to be the right answer?
Okay, the guy asked who I was. Absolutely correct. ठीक है, ए यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि जब भी क्वेश्चन में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा होता, जैसे यहाँ पे द गाय आस्क मी, तो दैट इज ऑब्वियस कि वो आपसे ही पूछ रहा है. सो आप यहाँ पे यू को फर्स्ट पर्सन में ही कन्वर्ट करोगे. ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है. ये गलत है, ये भी गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबडी, हियर वी आर. He asked who had been responsible for that. अब ये बेसिकली आपका इनडायरेक्ट में दे रखा है. अब आप मुझे बताओ कि इसका डायरेक्ट क्या होगा. दिस इज समथिंग जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस. All right, that was right, Mohammad Aryan. I got that. Please don't spam in the class. I got that. The way you've been spamming like so hard, don't do that. Even once you write option D, I'll just have a look at it. Okay, don't be worried about it because I've been looking at the answers of every student. It's just that reading every answer is not really happening. Okay. Pratyusha says C. Who is responsible for this? Be very careful in choosing your answer, okay? It says like who had been responsible for that. The very question that you see. He asked who had been responsible for that. So who was responsible for this? Who has been responsible for this? Who is responsible for this? Who shall be responsible for this? What is the right answer? A, B, C or D? Okay, Aryan says B. All right, Divya says option A. Okay. Alrighty, absolutely correct. This is has been converting into had been, and of course, this is going to be converted into that. However, the answer for A could also have been this because your past tense, okay, it changes into your past past perfect tense. Okay. Now is यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे ऊपर was नहीं दे रखा. This is wrong. Who shall का should हो जाता है. This is also wrong. ठीक है. चलिए हमारा next question. He said, all right, something happened here. Okay. He said, how much is left to do? What are we gonna write in here? He said, how much is left to do? What will you write here? He said, how much is left to do? He asked how much had been left to do. He asked how much had been left to be done. He asked how much was left to be done. He asked how much was still left. So what is going to be the right answer? Okay, whatever your doubt is, just come up with that. He asked how much had been left to do. He asked how much had been left to be done. He asked how much was left to be done. Absolutely correct. Okay, absolutely right. Okay, good. Now, guys, the next question. Shantanu said, where have you been? Shantanu asked me where I had been. Shantanu told me where I should have been. Shantanu told me where I was. Shantanu said that I had not been there. What's gonna be the absolute amazing correct answer? A, B, C, or D? All right, fun. Have good time. Okay, so Shantanu asked me where I had been, told me where I should have been. Of course, A is the right answer because have been दे रखा है, आप उसे convert कर रहे हो had been में, where के बाद आप I लगा रहे हो, यहाँ पे should आ रहा है, this is wrong. Told me नहीं है, I had not been कहीं नहीं है, negative sentence नहीं है. Again, now certain important aspects that I would like to share with all of you related to this particular thing whenever you are dealing with the questions. Then we are switching to our dialogue based practice. Okay, just make sure that you all are listening to me carefully. Very important thing is like whenever you are converting, at first point you should know this and you should keep this in your mind that you have to remove the comma and you have to remove the inverted commas. If you're keeping and retaining the comma in the inverted comma, you will be losing your marks because punctuation does play a very important role while we are converting the the direct sentence into indirect. Okay, do not use that as a joining conjunction ever in your questions, not at all. If you're doing it, you'll be losing marks. Use only WH word as the joining conjunction in the WH question, and if whether in all your closed questions. Okay, do not use that. That's not right.
Remove the question mark. Only period must come at the end of the sentence. A very important point to be kept in your mind. Write the subject after the WH word in indirect speech. Kindly do that. Okay. Immediately after the WH word should come the subject. And this is applied to your yes no questions as well. These are the important things. अगर आप ये थोड़ा मिस करते हो तो आपके टीचर हो सकता है आपको आधा मार्क्स दे दे. कुछ टीचर्स जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट नहीं लिखा, आपने सीधा वर्ब लिख दिया, या फिर आपने सीधा लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया, या फिर आपने क्वेश्चन मार्क रिटेन रख लिया, दो गलतियां हो गई, मार्क्स ऑटोमेटिकली कट जाते हैं. कोई भी टीचर आपका हाफ मार्क रिटेन नहीं रखती है. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? समझ में आ गई बात? गॉट इट एवरीबडी? समझ में आया? यस. चलिए. So now certain questions, we are gonna practice them. You better read them and tell me what's gonna be the answers. It'll be taking a little bit of your efforts, but worth for your examination, all right, and for your good practice. Hi Rohit, a very good morning still. Okay, yeah, you are quite late. Okay, so Neha is the first person. She says, I am really looking forward to the class picnic tomorrow. Namita, yes, after a long time, we will be meeting our friends and teachers. Neha told Namita, dash looking forward to the class picnic. Dash. Namita agreed that after a long time, dash friends and teachers. What's gonna be the right answer? Tell me, what are you going to write? Like, this is going to be totally subjective. You have to tell me. There are no options that are there. तो यहाँ आप क्या लिखोगे? Hi Neil, I'm doing very well. Thank you so much. I hope that you're doing good too. All right, जल्दी बताइए. Neha told Namita dash looking forward to the class picnic. Quickly, everybody. Try to give the answers. Are you all making certain efforts in doing it? Okay, all right. All right. Neha told Namita that she was really all right. That लगाओ ना. सुरेंद्र क्या हो गया बेटा? That लगाओगे. रोहित प्रत्युषा that कहाँ गया? बहुत important है joining conjunction. बहुत important है. That she was really okay looking forward to the class picnic the next day. Okay, that's right, Divya. All right, or we could say the following day. So Namita agreed that after a long time, what are you gonna write? That she was the class picnic the following day. Okay, she was really bitter, really Sajan. All right, and I answered all the questions according to question, but teacher had cut my marks in grammatical mistake, but I know tenses, so what would be my mistake? Sustain beta, देखो सबको tenses पता होते हैं. If you are saying so convincingly, of course you must be good at it. But maybe there could be any spelling mistake, or maybe was any kind of a punctuation error, because the marks are being deducted for that too. Maybe you didn't consistently follow the tense in the question. Maybe the tense of the question was a past and you were answering in the present. So all these things really matter. I really don't know what was your answer. If I would have looked at your answer, I would have like told you more precisely then. Okay, that she was looking forward to the class picnic the following day. That they would be meeting there. Very good, Divya. Absolutely correct. Absolutely correct. चलिए आंसर देखते हैं. That she was really the next day, और यहाँ पे आप next की जगह following भी लिख सकते हो. Okay, and they, what exactly the thing here is that they, here it is not well, they would be meeting there. Okay, they would be meeting there. Yes, there. सुरेंद्र बेटा ये वाला there आएगा, ध्यान रखो. THERE मैं बच्चों को ऐसे सिखाती हूँ कि E से सीधा मतलब डायरेक्शन आती है, एंड THEIR आप ये ऐसे I का human बना देते हैं. So this is something that you like use in the context of the humans, and this is something that you use in the context of the place. Okay, keep it in your mind. ऑल राइट. हाँ ठीक है, सबका आंसर ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम. ऑल राइट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बायोलॉजी टीचर, आई इंस्ट्रक्टेड यू टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया. व्हाई डिड यू सबमिट अ ब्लैंक शीट? समीर, सर, I had drawn the diagram of bacteria, but you can see it because it is not visible to the naked eye. Okay,
Is that clear? Now, the biology teacher had instructed Sami to draw the diagram of a bacterial cell and ask him, बताओ क्या आएगा यहाँ पे? And ask him what is going to be the answer here. Everybody quickly. What are we going to write here? What are we going to write, everybody? Okay, and ask him why did you submit a blank sheet? बेटा पहले टेंस देखो, टेंस क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, डिड दे रखा है, डिड के साथ सबमिट है मेन वर्ब, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है. सिंपल पास्ट टेंस किस में चेंज होता है? सिंपल पास्ट टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में. तो क्या लगाओगे? बाय, बाय के बाद क्या आएगा? एवरीबडी ट्राई योर लेवल बेस्ट. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं. डिड नहीं आएगा. डिड क्यों लगा रहे हो अनुराधा सुरेंद्र बेटा? डिड नहीं आता ना. डिड के साथ क्या लगाओगे? वाई ही हैड सबमिटेड. वर्ब को चेंज करो ना, वर्ब चेंज होनी चाहिए ना. वाई ही हैड सबमिटेड, राइट? दैट इज हाउ यू शुड गो अहेड विद. So you should be writing like this, that why he had submitted a blank sheet. Sami respectfully answered that he had drawn the diagram, but what are we going to write then? Yep, that is right, Divya. Why he had? Yeah, Pratyusha, that is absolutely correct. Now, what is going to be in the B part? Sami respectfully answered that he had drawn the diagram, but what are we going to write? क्या लिखोगे आप ये? But के बाद से यानी कि अब आपको यहां तक चेंज करना है. This, okay? यहां तक आपको चेंज करना है, visible तक चेंज करना है. What are we gonna write here? Quickly, everybody. Yes, guys. There are a lot of questions, everyone. But he couldn't see. All right. Okay, let's have a look at the answers. Okay. Why he had submitted, but he couldn't see it because it, just a minute, because it was, sorry guys, this is also mistaken, because it was not visible. Is दे रखा है ना, आप उसको was में change करोगे. Simple present is supposed to be changed into simple past. Okay. Next question, everyone. Read it. Alrighty. Let's have a look at it. Choose the correct options to fill in the blanks to complete the narration of Patty's conversation with Charlie. Charlie, dear Santa, here is a list of what I want. Okay. Now, Patty, how do you suppose Santa Claus can afford to give away all those toys? Charlie, promotion. Don't kid yourself. Everything these days is promotion. I will bet if the truth were brought about, you'll find that he's being financed by some big Eastern chain. While making the list of what Charlie wanted from Santa Claus, he asked Patty how all those toys. She said that dash and that it was possible as Santa dash big Eastern chain. Hey Shreyan, so take your time everybody and come up with the right answer. I'm providing you all 2 minutes and give me the right answer in the comment section. Quickly everybody. Yes guys, quickly give me the answers. Alrighty, so how was he supposed to? Okay. How? बेटा ये यही तो चीज है. How के बाद आप क्यों लगा रहे हो?
Okay, let's have a look at the answers. Santa Claus could afford to give away. Everything those days was promotion, was being financed by some big Eastern chain. All right, that is very important to understand. Yep, could afford to give away. Alrighty. Now the next question. Read the following dialogue between a mother and her son. Complete the paragraph that follows by filling in the gaps appropriately. Mary, did you see my new umbrella? Isn't it fine? Tony, yes, it is. Did you buy it from the mall? Mary, no, your father has brought it for me. Mary asked her son Tony dash and she wanted to know whether it was a fine one. Tony agreed and asked his mother dash. His mother replied in the negative and added that. So क्या यहाँ पे सही आंसर होगा? Quickly tell me everyone. What's gonna be the right answer here? Yes, everybody. Quickly, everyone. Okay, so if he had, all right. Did you see my new umbrella? If he had seen her new umbrella, Divya, ठीक है, very good. Okay, new बेटा सुरेंद्र सारे words important है, ठीक है? All the words are very important. शिवम नहीं हो रहा बेटा अभी, ठीक है? बाद में होगा. अभी आप interested नहीं हो session में, you can go, all right? ठीक है? Next, what is the next part, everybody? Next part क्या होगा? His mother replied in the negative. Sorry. Now Tony agreed and asked his mother. Okay, what are we gonna write here? Whether she had bought it from the mall. Absolutely good. His mother replied in the negative and added that. What are we gonna write in there? His mother replied in the negative and added that. What are we gonna write? His mother replied in the negative and added that his father had brought it for her. Absolutely good, guys. All right, all the answers are being given here. Okay, absolutely correct. चलिए next question की तरफ चलते हुए everybody. Garima. So after a decade in the industry, are you truly satisfied? Karan, I love the film industry. It has its flaws though. Garima, what do you mean by this statement? Karan, we are a bunch of competitive, ambitious, sometimes pretty people, but the passion cements us together. Garima asked Karan if after a decade in the industry, Dash, Karan told her Dash, although it had its flaws. Garima then inquired Dash. Karan explained that they were a bunch of competitive, ambitious, sometimes petty people, but the passion cemented them together. What is going to be the right answer? Yes, everybody. What exactly is the right answer? Is it A? I mean, are we going to, like, what is the chain that we are gonna bring in the verbs? All right, whether he was fully satisfied. Question mark नहीं लगाना है दिव्या. Don't do that. आपने सारा अच्छे से चेंज भी किया होगा तो फालतू में आपके एक मार्क्स कट जाएंगे. So Garima asked Karan if after a decade in the industry, okay, whether he was. बेटा शिवम वो लगाओ क्या कहते हैं कंजंक्शन कंजंक्शन नहीं लगाओगे मुझे कैसे पता चलेगा क्या लिख रहे हो. So whether he was truly satisfied. All right, that is absolutely correct. Okay, was he? अनुराधा बेटा कंजंक्शन कहाँ है? कंजंक्शन के बाद आप सब्जेक्ट लगाओगे. Was he? आपने तो वही रखा उसे. क्वेश्चन ही रह गया ये तो. आपने उसे रिपोर्ट ही नहीं किया. आपने इसका उसे आर का was कर दिया बट आपने उसको was ही क्यों लगाया है? Whether he was. Okay, truly, if he was truly satisfied, if he was fully satisfied, right? That he loved the film industry.
All right. Karan told her that he loved the film industry and okay. But क्यों लगा रहे हो दिव्या? अपने आप क्यों लगा रहे हो conjunction? आप joining conjunction है but और it has its flaws though. ठीक है. Okay. शिवम if कहाँ लगाया आपने? किधर है? love film industry. if कहाँ लगाया बेटा? क्या बोल रहे हो आप? ठीक है, so basically here we go. Garima asked Karan if after a decade in the industry. Yup. Sorry. Thank you. That is absolutely correct. If he was truly satisfied that he loved the film industry and what he meant by that statement. Absolutely correct. That part was already being given. Yeah, Shivam, you are absolutely right about that. Guys, since it was already being given है ना, so हम वापस से नहीं लगाएंगे. ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से यहाँ पे पढ़ने की चीज थी. All right. Okay, keep that in your mind. All right, although it had its flaws, वो already given है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है. आप but नहीं लगाओगे. ठीक है? Now, what he meant by that statement, that लगाओगे. हाँ, ठीक है दिव्या, बिल्कुल सही है. Right, Nishita, you are right about that. बिल्कुल ठीक. ठीक है? Okay, next question. Student, may I come in, sir? Headmaster, yes, come in. Student, good morning, sir. Headmaster, good morning. What do you want? Student, sir, I had to collect my transfer certificate. Headmaster, it is with the head clerk. तो चलिए अब यहाँ पे क्या होगा? What's gonna be the right answer? Okay, here we go. So the student asked the headmaster for permission to enter. The headmaster dash come in. The student then wished the headmaster a good morning. The headmaster wished the student a good morning and dash. The student said that he had to collect his transfer certificate. The headmaster said that dash. Okay, so what are we going to write in here? Okay, quickly, guys. Try to give the answers which are like absolutely perfect. All right. नहीं पता. Okay. I got that. Divya, you've been giving the right answer. Surendra, you too. Okay. Alrighty. So we can write a lot of things like whenever it's about yes, no. अच्छा ठीक है. आप वो वाला छोड़ो. आप लोग next बताओ मुझे. B part में क्या आएगा? The headmaster wished the student a good morning and what are we gonna write next? The student said that he had to collect his transfer certificate. The headmaster said that what? What are we gonna write in here? Quickly, everybody. जल्दी से बताओ. What is supposed to be the right answer? Okay, what he wanted. All right, the next one. What he wanted. Ask what. All right. They क्यों लगाओगे आप? They. Why are we using they, Shivam? All right, and said that it was what he wanted. Okay, ask what he wanted. It was with the head clerk. Okay, Pratyusha. ठीक है, चलिए. So ask him to. ओके अब यहाँ पे है ना जब आप बोलते हो द हेडमास्टर येस कम इन तो यहाँ पे ask him क्यों बोला जाता है देखो जब भी मैं आपको कोई सी चीज की परमिशन दे देती हूँ ना सो दैट मीन्स यू आप हमेशा ये फ्रेजल वर्ब वहाँ पे यूज कर सकते हो लाइक ask him लाइक मम ask me लाइक मम ask me टू कम इन दैट मीन्स कि मैंने बोला कि बेटा अंदर आ जाओ ठीक है लाइक दैट okay so ask him to ask what he wanted it was with the head clerk so it was pretty simple all the answers are being given here. Next question. Interviewer. Was shooting the Kashmir files in Kashmir challenging? Mr. Agnihotri. Filming is not an easy job for me, but in Kashmir it was even more difficult as the incident belonged to this state's people. Interviewer. How did the locals react to your project? Mr. Agnihotri. Many assisted us during the making of the film. There were many who realized that it was shame on the Kashmiris who did other all wrongs to Kashmiri Pandits. अपने आप एक बार ये रीड कर लो everybody.
दी बेटा दिव्या, वैल्यू दी ना, यस कम इन, आस्क हिम टू कम इन, कि मैंने दे दी परमिशन. Like when your principal is asking you to just go to the library and study, that means I'm giving you the permission. आपको वहां पे कार्ड की अब जरूरत नहीं है, मैं परमिशन दे रही हूँ कि आ जाओ अंदर या फिर जाओ लाइब्रेरी, दैट वे. ओके, तो यहाँ पे इसे पढ़ लो अच्छे से एक बार, क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ओके, इट कुडंट कम ऑन वन सिंगल लाइन. द इंटरव्यूअर आस्क्ड मिस्टर अग्निहोत्री डैश चैलेंजिंग इन कश्मीर. तो अब आप ये देखो, चैलेंजिंग इन कश्मीर, तो ये क्वेश्चन है जो आपको रिपोर्ट करना है. आप बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. टेल मी. डैश चैलेंजिंग इन कश्मीर. हाँ दिव्या, यस. Everyone, quickly give it a shot. Try your level hard for this. Okay, whether the challenging in Kashmir, देखो, the interviewer asked Mr. Agnihotri dash challenging in Kashmir. तो आपने words कहाँ से लिए? Dash challenging in Kashmir. So the interviewer asked Mr. Agnihotri if or whether, फिर क्या करोगे आप? If or whether. No, guys, you're not looking at it right. ओके, मैं आपको ना इसके आंसर्स ही बताती हूँ, ठीक है. लेट्स हैव अ लुक एट इफ शूटिंग द कश्मीर फाइल्स हैड बीन, ठीक है, वॉज शूटिंग था. वॉज शूटिंग किस में चेंज होगा, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट. ओके, कॉन्टिन्यूस. सो वहां पे चैलेंजिंग तो एंड में दे ही रखा था ना क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे दे रखा है. लेट्स हैव अ लुक एट इट अगेन. द इंटरव्यू आज मिस्टर अग्निहोत्री डैश चैलेंजिंग इन कश्मीर. जो पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब तो दे ही रखी है, हैड बीन आपको लगाना था. ऑल राइट, गॉट दैट. नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं गाइस, गो थ्रू दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, लेटर ऑन यू विल कम टू नो अबाउट इट, इट्स नॉट डिफिकल्ट. नेक्स्ट उन्होंने पूछा, मिस्टर अग्निहोत्री रिप्लाई दैट. आप जस्ट मेक श्योर गाइस यू गो थ्रू दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, आपको समझ आएगा. इन केस इफ यू डोंट गेट एनीथिंग, जस्ट मेक श्योर कि आप उसको क्या कहते हैं, ना सुरेंद्र, एक बार फिर से क्वेश्चन देखना, नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, और इधर टेक द स्क्रीनशॉट्स एंड देन राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक. यू विल अंडरस्टैंड कि क्या आंसर्स आएंगे. ठीक है, इट्स जस्ट दैट कि वो एक स्लाइड पे नहीं दे रखा, सो दैट इज व्हाई यू गाइस आर गेटिंग अ लिटिल कंफ्यूज्ड. हाउएवर देयर इज नथिंग टू बी कंफ्यूज्ड अबाउट इट, but you once you'll just start writing it on your own, you'll get your hand at it. ठीक है, is that clear? Mohan, I have been watching the sea and there hasn't been any trace of a ship. Vineet, I told you yesterday too that we'll be rescued, so have patience. Mohan, why do you ask me to keep quiet whenever I say something? Vineet, have you ever said anything sensible? Okay, so अब यहाँ पे बताओ क्या होगा. Correct answer. Quickly tell me what's gonna be the right answer here now. Quickly, everybody. Shivam, in order to create the rhythm, in order to create the musical effect. Okay, everybody, what's gonna be the answer? Mohan said, I have been watching the sea and there hasn't been any trace of a ship. तो यहाँ पे क्या आप लिखोगे? जल्दी से आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में. Quickly, everybody. Yeah, okay.
So he had been watching the sea. All right. When he had been watching the sea and added there had not been. And added क्यों लगाओगे आप शिवम अपने आप से? वहाँ पे and already दे रखा है. ठीक है? So you'll be writing Mohan said that that he had been watching the sea and there had not been any trace of a ship. Direct है. ठीक है? हाँ. Very good Pratyusha. You are absolutely right about that. Okay. All right. अच्छा वहाँ पे Vinit replied. Okay. What are you gonna write there? What are you going to write then? Alrighty, here we go. Mohan said dash when it replied. Okay, let's have a look at it. That he had been watching the sea and there had not been any trace of a ship. That he had told him the day before that they would be rescued. Alright. Why he asked him to keep quiet whenever he said something if he had ever said anything sensible. Alright. Okay. Now, Peter, I don't feel well today. Ryan, what can I help you, sir? Peter, can you take me to the doctor? Ryan, sir. Okay, yes, sir. So, what's gonna be the right answer here? What is going to be the right answer here? Yes, yesterday के लिए we use the previous day. Yesterday, whenever you have to talk about, I mean, whenever you have to write about the term yesterday, you say the previous day. All right. So, what is going to be the right answer? That he didn't feel, don't feel. Okay, don't feel well today. All right. That he didn't feel well that day. अच्छा ठीक है. Was not क्यों लगा रहे हो आप अनुराधा? बेटा was feeling होता आपका past continuous. यहाँ पे simple present दे रखा है. Simple present को simple past में change करोगे ना? Simple present को simple past में change करोगे. आप was feeling किस basis पे लगा रहे हो? क्या basis है? Yesterday, the day before. That he didn't feel well that day. Pratyusha, absolutely right. Ryan, as respectfully. What are we going to write here? Ryan, as respectfully. He was not feeling well that day. Okay, following. Today. That day होगा. Following day क्यों लगाओगे सुरेंद्र? Following day tomorrow के लिए होता है. All right. Okay, Ryan asked respectfully what he could help him. Right, Shivam. Right, absolutely correct. ठीक है. Then Peter asked the Ryan, what are we going to write here? Peter asked the Ryan. Peter asked Ryan. Okay, the should not be there. Okay, Peter asked Ryan dash. Peter replied in the affirmative. Whether he could take him, okay, could he took him to the doctor? Oh my god, alright. So that he did not feel well that day, what he could help him and if he could take him to the doctor. Okay, it was pretty easy and quite straightforward. Next question that we have with us. Shopkeeper, may I help you? Customer, yes. Shopkeeper, what do you want to buy? Customer, I want to buy a pair of sports shoes. Shopkeeper, I have just the right pair for you. Try these, please. Customer, oh, these shoes are so nice. I'll buy them. The shopkeeper asked the customer if the customer replied in the affirmative. The shopkeeper then asked the customer what he wanted to buy. The customer said that he wanted a pair of sports shoes. The shopkeeper said that he had just the dash requested him to try them. The customer said that the shoes were very nice and that he dash. So what is the right answer? What is the right answer?
Yes, everybody. What is going to be the right answer here? Alrighty, so here the correct answer is supposed to be this, where we go ahead with what? The shopkeeper said, okay, the customer replied, I'll buy them. The shopkeeper asked the customer if, what are we going to write here? If he might need any help, alright, that is absolutely correct. Okay. Then we are gonna make a move ahead. All right, he might help him. All right pair for him and would buy them. Next, guys, Reena, have you seen Three Idiots? Rakesh, I saw them yesterday in my class. Reena, I was talking about the movie. Rakesh, I thought that you were talking about the Three Idiots in the class. Reena asked Rakesh, dash Three Idiots. Rakesh replied that dash. All right, here it is class. Okay. Reena further said that dash. Rakesh replied that dash in the class. So जल्दी से बता दो आंसर क्या है. आंसर बहुत ही easy है और straight forward है. So you better tell me the right answer. Quickly, everybody. Whether he had seen Three Idiots. Okay, whether he had seen, all right, whether he had seen Three Idiots, whether he had seen, absolutely good, very good. So if he had seen, okay, if he had seen them the day before in his, she had been talking about the movie, he had thought that she had been talking about the Three Idiots. Okay, that's how we're gonna go ahead with it. Next question. Shubham, I have lost my wallet. Inspector, how did you lose it? Shubham, my pocket was picked. Inspector, where did it happen? Shubham, in the local market, sir. Shubham reported to the inspector Dash lost his wallet. The inspector asked him Dash. Shubham replied Dash. The inspector further Dash. Shubham respectfully replied that it has happened in the local market. So what are we going to write here? Quickly, everybody. Okay, inspector. Okay, Shubham reported to the inspector that he had lost his wallet. Very good, Shivam. That he had lost. Chinmay beta kya likh rahe ho? How he had lost. Okay, how he had lost. Okay, okay, how he had lost. ठीक है, how he had, absolutely right. Shubham replied that his pocket had been picked. Okay, absolutely right. Then we see the inspector further, what? He further asked or inquired where, okay, it had happened. Okay, that is what we are gonna write in here. So that he had, how he had lost it, that his pocket had been picked, and ask him where it had happened. Okay, next question. Father, what are you going to do? Son, I will phone the warden. Father, what's her name? Son, rather she is a very helpful person. Father, will she help you? Son, yes, I am sure of that. The father asked his son Dash to do. The son Dash phoned the warden. On this, the father asked Dash. The son answered that it was Radha. The son also said that she was Dash. His father then asked Dash, to which the son replied in affirmative and said that. So what are we going to write in here? What are we going to write in here? Quickly, everybody. Try to give me the answer as quickly as possible, everyone. Make sure that you all are understanding what we are doing. Like, I'm just trying to tell you all that such are the questions, okay? Like, that come in your examination, and you have to be smart enough to understand, like, how the dialogue actually progresses. ठीक है, तभी थोड़ा क्लैरिटी रहती है सारी चीजों को लेके ना, like this becomes so easy for us to understand as well. Okay, all right, what he was reply that he would phone the warden. Okay, that's pretty fine. Reply that he would phone the warden. What was her name? Quickly, right? Okay, right.
So what he was going and replied that he would, what her name was, a very helpful person if she would help him, and he was sure of that. Okay. Susan, why have you not brought my party dress? Jenny, I haven't brought it because I had gone to my uncle's house with my parents, so I forgot to keep it. Suzanne, don't give me silly excuses. I want to know the truth. Jenny, I'm sorry, Suzanne. I was chatting with my friends till late. I forgot that you needed it urgently today. So, what's gonna be the right answer, everyone? Quickly have a look at it. Alrighty. Here we go, everyone. Suzanne asks Jenny, जल्दी से बताओ क्या आएगा पहला ऑप्शन. What is going to be the first option? Quickly tell me. Why have you not brought my party dress? So Suzanne asks Jenny, why did क्यों लगा रहे हो प्रत्युषा? Have आया है, have brought यानी कि present perfect changes into past perfect. पहला काम ही हमारा ये है कि आप टेंस को देख के ये देखो कि टेंस किस में चेंज होगा. ठीक है, सो यहाँ पे हैव ब्रॉट जो है वो हैड ब्रॉट में चेंज होगा. तो सुजैन आस्क्ड जेनी, ऑल राइट, व्हाई शी, ऑल राइट, हैड नॉट ब्रॉट हर पार्टी ड्रेस. डिड क्यों लगा रहे हो? हैव कहाँ गया? डिड क्यों लगेगा दिव्या? व्हाई ही शी हैड नॉट ब्रॉट हर पार्टी ड्रेस. या सुरेंद्र? ऑल राइट, दैट इज एन एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर. ठीक है, बी पार्ट में क्या आएगा? जेनी सेड दैट शी hadn't brought it because she, what are we gonna do? Past perfect is going to be past perfect, right? Because she had gone to her uncle's house with her parents. Okay, right? Do you agree? So this is going to be the answer. Why she had not brought a party dress, hadn't brought it as she had gone to her uncle's house with her parents, so she had forgotten to keep it, told her not to give silly excuses, and further said that she wanted to know the truth. Now the next question. Sanjay, I'm surprised to see you here in Delhi. When did you come? Madan, I came here yesterday. I've been offered a job here. Sanjay told Madan dash, and as dash, Madan replied that he had come there the previous day and added that. So what's gonna be the right answer? दिव्या मेंटी बेटा नेक्स्ट टाइम होगी. अभी मुझे आप लोगों को अच्छे से समझाना है कि क्वेश्चन को हम कैसे प्रोग्रेस करते हैं जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो आगे जाके. दैट इज व्हाई आई एम कीपिंग इट दिस वे राइट इन हेयर. जल्दी से बताओ मुझे, क्विकली एवरीवन, क्विकली टेल मी एवरीबडी, व्हाट्स गोना बी द आंसर. संजय टोल्ड मदान. Okay, what are we going to write here? I'm surprised to see you here in Delhi. When did you come? And asked dash. Madan replied that he had come there the previous day and added that. What are we going to write? Quickly, quickly do that. Let's have a look at the answers. That he was surprised to see him there in Delhi when he had come and he had been offered a job there. Okay? Alright, chaliye. Next question. Ram, what a cold day it is. I think this must be the coldest day of the season. Shyam, I don't mind the cold. It is the summer that bothers me. Ram, well, I'm only worried about my mother. She stays alone in Shimla. Ram explained that dash and was positive that dash. Shyam replied that dash and further added that dash. Ram started that and dash in Shimla. Okay, so what are we going to here talk about? It was a very cold day. It must be the coldest day of the season. He did not mind the cold. It was the summer that bothered him. He was worried about his mother and that she stayed alone in Shimla. Next question. Okay. Nup nup, that was not right. Surendra, that was not right. Ram, I want to meet the principal. Peon, sir is not in the office. Ram, when will he come back to the office? Peon, I think in another 20 minutes. Ram, where are the meeting hours? Ram went to the principal's office and told the peon dash the principal. Respectfully, the peon told him that dash. So Ram asked him dash. The peon replied that dash minutes. Ram again inquired from the peon what the meeting hours were. Quickly give me the answer, everybody. यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दो कमेंट सेक्शन में. क्विकली गाइस, क्विकली मेक इट हैपन. जल्दी. Kindly do as I say.
Okay, let's have a look at the answers, everybody. That he wanted to meet. He was not in his office when he would come back to the office, and he would be back in another 10 minutes. Okay, next question. All right, here we go. Now let's have a look. All right, here we are. Now, Mrs. Sharma, okay, the next question. Mrs. Sharma, Bhola, lock the door as I'm going out. Prepare the dinner by 8 p.m. Bhola, where are you going, madam? Please come home early. Mrs. Sharma, are you going to tell me what I should do? Don't advise me. Mrs. Sharma ordered her servant Bhola, dash, and then it goes. So, यहाँ पे क्या सही आंसर होगा? Quickly, everybody, what is going to be the right answer here? Mrs. Sharma ordered her servant Bhola. All right, what did she order? Like, there is an order, it's an imperative sentence. Whenever we are dealing with the imperative sentences, we are always dealing with the preposition to plus the infinitive form of the verb. Okay, this is like an important thing that you have to keep in your mind always in forever. So, what's gonna be the right answer? Mrs. Sharma ordered her servant Bhola to lock the door as she was going out. All right, she instructed him to prepare the dinner by 8 p.m. All right. So to lock the door as she was going out to prepare the dinner by 8 p.m. where she was going and if he was going to tell her what she should do. Right. Next question. Shivam, where's my car? I remember parking it here. Policeman, the car has been towed away as you parked it in the no parking zone. Shivam, can I be excused this once? Policeman, I hope you'll remember the lesson you learned today. Okay, this should be the last time. Don't repeat the mistake again. So what is going to be the absolute amazing correct answer here in 2? Shivam as the policeman, जल्दी बताओ यहाँ क्या सही आंसर होंगे. Yeah, Surendra, you have been giving the right answers. यहाँ पे जल्दी बताओ कि क्या correct answer है. Come on, quickly, come on, everybody. What is going to be the right answer? Okay, so here we have the answer, which is where his car was, that he remembered parking it there, had been towed away as he had to excuse him that once the lesson he had learned that day, not to repeat the mistake again. Okay, that is like a very important kind of a question that you have to keep in your mind always. Alrighty. Now the next question, Arun. Hello Rakib, how are you? Rohit, I'm fine, and you? Arun, I'm fine too. Rohit, where were you? What were you reading about, Arun? The importance of planting trees. Rohit, trees save us from floods and many other natural calamities. Arun wished dash. Rohit said that he was fine and asked Arun how he was. Arun said that he was fine too. Rohit wanted to know what. All right, dash about. Arun said that he was reading about dash trees. Rohit said that the trees dash from floods and many other natural calamities. So we have Rohit and asked how he was. Arun had been reading the importance of planting and savers. Okay. Next question, mother says, Rahul, where did you go around noon? Rahul, mom, I was with Sanjay at his house. Mohit, you should have told of it. I was greatly worried. Rahul, I'm sorry, mom. I shall do so in future. Mother asked Rahul, dash around noon. Rahul replied that dash with Sanjay at his house. Mother told him that dash her of that as she was greatly worried. Rahul expressed regret and assured her that, okay. So, what is going to be the right answer? Where he had gone, he had been, he should have told, and he would do so in future. Now, the next question, everybody, and this is going to be the last question that we are doing today. Mr. Gupta, can you manage the post of a public relations executive? It will involve some degree of stress too. Raman, I'm sure I'll be able to do this job competently. I know there will be difficult times, but I'm used to handling problems, as you can see from my resume. So Mr. Gupta asked Raman Dash, he told him candidly that the job, okay, Dash, some degree of stress too. And Raman assured Mr. Gupta that Dash to do the job competently. He told him that he knew there are Dash difficult times and assured him again that he was used to handling problems as he could see from his resume.
So answer, if he could manage the post of public relation executive, would involve, he would be able and would be. That is what we are doing today. So guys, please make sure that you practice extensively. The more you're going to practice, that is going to be good for your own self. So kindly make sure that you are always understanding what does the question say, and then you can make a move with the best for yourself. Okay, we are left with two more questions, everybody. Let's get going with those questions as well, and then we are gonna end our session. Andronicus stood in the arena in dismay. The king was watching the hungry lion coming to eat Andronicus. King, the lion is going to kill and eat Andronicus. Oh God, please help me. King, why didn't the lion kill you? Andronicus, we are old friends. So यहाँ पे आपके answers क्या हैं? Was going to help me why the lion had not killed and were old friends. Okay, so we are done, everybody. We there, like, you can always use my code PSH10 because we have got a lot of like courses. Okay, which are there for all your good. Okay, we have the plus and the iconic courses, so you can just go on the website and check all the prices. You can use the code PSH10 because it will give you a discount, and that'll be like really really helpful for all of you. Also, we have this compete, you all can battle and know that where you stand. You can play one-to-one live question battles and improve your rating. It's live on the Unacademy Android app, so you better go and check out everything on the site of Unacademy. Subscribe and meet me in the plus classes, because a course has been going on where I'm dealing with all the aspects of your English literature, which is supposed to be asked in your examination. Alrighty, everybody. I hope you all love the session. Do not forget to like it and share it with all your friends. Thank you for attending it. If you are like attending it for the first time, then definitely hit the subscribe button, the bell button, and subscribe the channel. Thank you. Thank you, Surendra. Thank you, Pratyusha. Thank you, guys. Thank you so much. I'll catch you all sooner. Take care. Bye bye.